Hello everyone, a very good morning, good afternoon in fact. And we shall start with disasters and emergency response. And in the context of the Himalayan region, let me start by saying that, well, I'm a geologist. I am not much related to healthcare. But then over time, it has been like 25 years of me being a geologist in a profession where I have worked in the Himalaya. I have probably covered a lot of disasters, doing assessments and also post-disaster needs assessment, which is done, very detailed work is done after a disaster. So in that context, definitely there has been many experiences that I have encountered, or I have spoken to people who are affected by disasters, and I have come to know, well, this also can come up, that also can come up. Let me tell you by citing something from the recent disaster in Dharali. I reached there probably on the 4th day or 3rd day, and as soon as I reached there was already a team and a team of doctors, and out of them one was a mental health doctor, probably Dr. Rohit Gondial. I don't know if he is already there. So I had a long discussion with the other doctors as well, and I could understand that this is just another dimension. It is not only a geologist who face how to do an assessment in a disaster hit area, but giving health care in a condition where a disaster hits is another dimension. Because you see, you have to reach there where roads are all broken. Even helicopters cannot fly. During Dharali, there was continuous cloud cover that helicopters could not even take off. In that condition, in some window, they have to take in. There were a lot of people to be brought down. There were a lot of people to be taken up. There were rations to be taken, there were medical supplies to be taken, and priority was definitely to doctors and how to take the doctors there so that immediate on-ground medical health could be provided. So in such kind of situation, I am happy to have our panelists today, Dr. Uniyal and Dr. Bhardwaj. And Dr. Bhardwaj is from Six Sigma High Altitude Medical Services. And Dr. Uniyal, Madhur Uniyal is from AIIMS Rishikesh. So let me start by asking them with their experiences. Dr. Bhardwaj, when you have been in any disaster, can you please tell one such kind of example where you felt that there was a complete lack of, you could not manage a situation and you were at a fix? So anything like that has occurred? श्योर मैम। देखिए, जहाँ भी मुश्किल वक्त होता है हम लोग सख्त होते हैं, और हिंदुस्तान लैंड है डिजास्टर का। हिमालय में डिजास्टर आता नहीं है, वहीं रहता है। 2013 का एग्जाम्पल है मैम, केदारनाथ फ्लड, जहाँ 511 लोगों को हमने रेस्क्यू किया। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे अश्विनी चौबे साहब, खंबे पे चढ़े हुए थे। परिवार के 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी, कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तो हम पहुंचे, रेस्क्यू किया। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी वहाँ पर कि हमारे पास इतनी सारी फोर्सेस हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, लेकिन डॉक्टर्स अगर ग्राउंड जीरो पे वहाँ मौजूद होता है तो जान बचा सकता है। हम ये कहते हैं मैडम, अगर हमारा मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो सकता है तो आप सैकड़ों जानें बचा सकते हैं। क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जब किसी को रेस्क्यू करके लाती है, वो हॉस्पिटल लेके आती है, और हॉस्पिटल में, हालांकि हम ये नहीं कह रहे हॉस्पिटल के अंदर, एम्स जैसे हॉस्पिटल के साथ हमारा भी एग्रीमेंट है, डॉक्टर साहब के पास हम केदारनाथ बद्रीनाथ से भी पेशेंट भेजते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। लेकिन वहाँ ग्राउंड जीरो पे कौन है? एसडीआरएफ का बंदा अगर किसी की स्पाइन टूटी पड़ी है, रीढ़ की हड्डी टूटी पड़ी है, हाथ पैर टूटे पड़े हैं, उसको रेस्क्यू नहीं कर सकते आप, उसको पहले स्टेबल करेंगे फिर रेस्क्यू करेंगे। तो व्हाई नॉट मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ शुड बी ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर इनटू द डिजास्टर, स्पेशली जब हिमालय की बात होती है। क्योंकि हिमालय में मैं कह रहा हूँ डिजास्टर आता नहीं है, वहीं रहता है।
तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ पर जो शॉर्टेज थी वो हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज थी। दवाइयाँ पड़ी थी, बहुत सारी एनजीओज हैं जो मेडिसिन भेज रही थी, कूड़े के ढेर की बराबर पड़ी थी मैडम वहाँ पर। किसी को पता नहीं कौन सी दवाई लेनी, कब लेनी, कैसे लेनी है। ये सिचुएशन हमने वहाँ पर देखी। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं बात बहुत ही ब्लंट बात करता हूँ मैं एक तरीके से। हिमालय में हम काम करते हैं, आप में से कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि माउंटेन मेडिसिन में ट्रेंड हैं? कितने फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो माउंटेन मेडिसिन में ट्रेंड हैं? कितनी नर्सिस ऐसी हैं जो माउंटेन मेडिसिन में ट्रेंड हैं? बॉडी के पैरामीटर चेंज हो जाते हैं जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं। यहाँ देहरादून से मैडम जब आप फ्लाई करते हैं, यहाँ 1500 फीट का ऑल्टीट्यूड है, आप 14,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर चले जाते हैं चारधाम में, कोई एक्लिमेटाइजेशन नहीं। वहाँ जाकर के प्रॉब्लम होनी ही होनी है। और जितना बड़ा भगवान, माफ करिएगा, जितना बड़ा भगवान उतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर है। और लोग ओल्ड एजिस में यात्राओं में जाते हैं। ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा कि अगर आप यात्रा 70 साल की उम्र में यात्रा कर रहे हैं भाई लोगों, तो भगवान का आशीर्वाद कितना चलेगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल। वही यात्रा अगर आपने 40 में कर ली, 50 में कर ली, भगवान का आशीर्वाद भी लंबा चलेगा, स्टेट भी मजबूत होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, हेल्थ केयर भी बढ़ेगा, डेथ रेट भी कम होंगी। तो ये चैलेंजेस हैं मैम, जिसको हमको एक पॉलिसी डिसीजन की तरह देखना चाहिए और पॉलिसी मेकर्स को काम करना चाहिए। इससे पहले सीएसआर पे बात कर रहे थे हम लोग। मैडम मैं कहता हूं सरकार को सब कुछ नहीं करना कि मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही भगवान हूं, नहीं। सरकार का काम है ऑब्जर्वेशन करना, पॉलिसी बनाना, सिस्टम बनाना। विवेकानंद फाउंडेशन केदारनाथ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यों ना आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओज को आगे बढ़ाते जो काम करें और आपको ग्राउंड जीरो पर लोगों की जान बचाने में मदद करें, एम्स तक पहुंचने में मदद करें। जी मैम। सपोजिंग हेल्थ चेकअप होता है, और मैं जानती हूँ कि केदारनाथ जो भी जाते हैं वहाँ जाके सीधा हेल्थ चेकअप होता है, तो क्या आपको लगता है कि मोर विगोरस एंड डिटेल हेल्थ चेकअप नीचे हो, जहाँ से यात्रा शुरू होता है, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है? मैम बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, केदारनाथ में हेल्थ चेक होना, बद्रीनाथ में हेल्थ चेक होना, या हरिद्वार में हेल्थ चेक होना आई वॉश है, सिंपल, कुछ भी नहीं। अगर यात्री उड़ीसा से चलता है, राजस्थान से चलता है, कर्नाटका से चलता है, उसका हेल्थ चेक वहीं हो जाना चाहिए और उस हेल्थ चेक को अपलोड करे तभी उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा अमरनाथ यात्रा में होता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में होता है, चार धाम में नहीं होता है। वहां आप जितना मर्जी स्क्रीनिंग कर लीजिए, आप उसको रोक ही नहीं सकते, वो दर्शन करेगा ही करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उसका हेल्थ चेक करना पड़ेगा, उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके लिए हॉस्पिटल को इम्पैनलमेंट करना पड़ेगा पूरे देश के अंदर। क्योंकि आज चार धाम यात्रा मैंने स्टेट की यात्रा नहीं है, एक नेशनल यात्रा, एक इंटरनेशनल यात्रा है। तो हमको हेल्थ चेक जहां से यात्री चला उसको वहीं पर हेल्थ चेक होना चाहिए। जी थैंक यू। डॉक्टर उनियाल, एम्स ऋषिकेश ने तो एक बहुत बड़ा जो एक डिज़ास्टर है सिलक्यारा हैंडल किया था, एंड इन फैक्ट इट वाज सो हाईलाइटेड, इट वाज इन लाइमलाइट एंड एवरीबडी वाज वाचिंग, और ऐसा लग रहा था जैसे आज निकलेगा, कल निकलेगा, एवरी डे वी हैड द न्यूज़ दैट बस आज कल निकल ही जाएंगे। एंड यू मस्ट हैव, एम्स ऋषिकेश मस्ट हैव अरेंज्ड ऑल प्रिपरेशंस। वी वर हियरिंग दैट the ambulances are all ready and every doctor is ready, they are waiting for them to come out. But when it delays for days and days and days, you have certain things in place and you have to then keep on replacing them because time is running out. So are there anything that you can point out in such situation where it's dicey when you are supposed to respond? Madam, healthcare is a concept, it's not a location. Doctors which are there at the site, it is not just they who are important. It is, what is important is whether those patients, for example, we are continuing from Silkara example, what Medicare they need, is that expertise available there or not? AIIMS Rishikesh was involved in the initial stages of the Silkara rescue tunnel only. A detailed rescue plan, a medical evacuation plan, and how those people should be nourished and how the complications when they come out should be managed was definitely done there. And when this was a very good example of inter institutional collaborations.
State government was there, AIIMS expertise was there, engineering was there, and even help was sought from the different countries as well. So when we become public-centric, the outcomes are always good. But if we become institute-centric, then outcomes definitely will not be good. So yes, what actually is realized in these situations is dynamicity of changing of protocols. We should not have one fixed protocol, and we should not just stick to it. With changing situation and changing resources, they should be changed. And I think that's why all these people were rescued. And after so many times, it's an example. We realized that there has been no deaths. So we think that it was easy. It was not easy. There was no complication. That's why it was planned meticulously. So I think the dynamicity of the situation and flexibility to change decisions, not stick to them, and institutional collaborations will always yield good results. Can you tell me, Dr. Uniyal, like you have a trauma unit, separate trauma unit, who is probably, kept especially for disasters. But during non-disaster times, do you have certain things in place which you revise and improvise and you try to, upskill yourself? Like I'll tell you, in geology, we have something called disaster scenarios. What we do during disaster scenario is, supposing we take one disaster, earthquake, and we take a city like Dehradun, and we try to bring in all stakeholders and we give them assignments. Now there will be somebody from public, and the public will say that, okay, my house is broken, everything is broken, this is gone, lifeline, water supply is gone, electricity is gone. Then the decision makers and the stakeholders have to take care of that situation. So do you run programs like that, trainings like that, where you pretend there is a scenario and you try to act? I'll tell you one example. Like you have got mobile units which you establish in situ in disaster place. Supposing you find a ground, but the ground is covered with snow, and you have to clear that ground to make it level. Will you be clearing it or pressing it? Because snow might not be, cleared, but pressing it will be much better. So when you go to that ground, you understand what you have to do. So do you have this kind of... Totally, madam. See, you said, let me tell you frankly, being in a Himalayan state of Uttarakhand, disaster is happening every day. We are a very small state. We don't figure out in the motorized states in the country. Neither do we figure out in mortalities. But when we consider one data, that is disability adjusted life years, that is years of life lost due to disease or death, in that our state is the topmost. The reason being, our mechanism of injury is different than rest of the country or rest of the plains. For example, in Delhi, the commonest accident is two-wheeler hit by four-wheeler. In our state, the commonest accident is bus fell into a gorge. So all the years of life lost are at single time. So to say that we wait for disaster, this is a land of disasters. And for that, we realized this in 2019. We created the level 1 trauma center, the only level 1 trauma center in the state. And we got super specialization. After AIIMS Delhi, ours was the first center to get to super specialization. We realized that for first 6 months, we were not getting the patients we were supposed to get. We are not getting seriously sick and injured patients. We were getting patients who could have been treated at CHCs and PHCs. So when we got into the thing, we realized that patients, death was there, we knew that, were not reaching us alive. So for that, and then to keep the relevance of a medical institute like AIIMS, we had to go into pre-hospital care. We had to go and train people. You said, do you have such situations? I'll tell you, madam, every year from 11th to 17th October, AIIMS trains 1,000 students across near AIIMS Rishikesh, sorry, 5,000 students near AIIMS Rishikesh. And we don't train them once. We train them when they're in 7th. Then we again the same cohort in 8th, and then we train them again in 9th, so that when they come out of 10th, when they pass out, provide care. More or less, every year from 11th to 17th, we do a trauma rath, which is a training, a vehicle with trainers, and we go to all the medical institutes. We believe that medical care, we don't work as institutions, we work as partners.
So we come to Dehradun Medical College, we go to Haldwani, we go to Srinagar, we go to various other places where we are invited, and now we are getting invited a lot many places. The intention is, yes, in one day we cannot train everybody, but one day sensitization can happen. People can realize that which patient needs to be sent where. So even if that is being done, and I'm very happy to tell you that all of our success stories, most of our success stories are because of this. We've also been training the Char Dham Yatra taxi drivers, and for last 5 years we have been training SDRF as well. We are in the process of revising their books also. And Sir said mountain medicine. For this year, first time we got experts from Brigham Young University, Utah, and we trained SDRF people on mountain medicine as well. Yes, thank you very much. That means there is a process of streamlining how help can work during disaster before you reach, and so that they know when a disaster comes what lines they have to follow, who will be prioritized and who will be treated immediately. I would like to ask Dr. Bhardwaj, what do you understand is the situation or the scenario at local level? Like before you reach, I know that you can reach very quickly and you have all your mobile units and you want to establish it there so that you can give immediate, even high level of response. But what do you expect from locals? How can they help in the first response? यस मैम, ये लोकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन एक ग्लोबल तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको, जो कि लोकल लेवल पर जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उसको हमने इक्विप करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, चाहे उसके अंदर वहाँ का आशा वर्कर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे नर्स हो. जब तक हम उसको इक्विप नहीं करेंगे, फौज के अंदर एक नियम होता है, ट्रेंड हार्ड एंड फाइट इजी. आज वो ज़माना चला गया कि आमने सामने की लड़ाई होगी, बॉर्डर पे लड़ रहे होंगे, नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे. फौज से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि हमारे लोगों को माउंटेनियरिंग में ट्रेन किया जाए, हमारे लोगों को मेडिकल रेस्क्यू में ट्रेन किया जाए, हमारे लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज के अंदर ट्रेन किया जाए. उनके पास में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है. मैं जब एक कॉमन आदमी 350 डॉक्टर्स को और 400 पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? ट्रेनिंग दीजिए उनको इक्विप कीजिए. हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से मैडम मैंने 350 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग कराई है, और आज मेरे पास 350 डॉक्टर ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर से रास्ता लेके जंप कर सकते हैं. और अगर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूं, जो सामने बैठे हैं मेरे, आप जुड़िए हमारे साथ में और हम वो काम करेंगे, वो दुआएं